वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट जो हमारा टॉपिक था इन लास्ट वीडियो दैट वाज अबाउट द बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। टुडे वी विल डिस्कस द जेनेटिक मटेरियल इज DNA and that was the last and final experimental proof that DNA is the genetic material. इससे पहले genetic material है that is maybe that was protein, maybe that was DNA। तो एक confusion था कि genetic material है वो protein है या फिर genetic material है वो हमारा DNA है, क्योंकि transforming principle में हमारे गिरफ्त ने ये बताया था कि there is something is transferred from S strain to heat killed S strain to R strain। तो हमारे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया। उन्होंने एवरी, मैक्लियोड एंड मैकर्टी, इन्होंने ये बताया तो था दैट जेनेटिक मटेरियल इज DNA, बट they couldn't give the experimental verification या experimental proof that DNA is the genetic material। तो इनका ये मानना जो genetic material DNA है, it was dismissed here because they couldn't give the experimental proof। Next, Hershey and Chase, हमारे नेक्स्ट जो प्रोफेसर थे दैट वॉज या दोज वर हर्शे एंड चेज, एल्फ्रेड हर्शे एंड मेथा चेज। एंड they gave the final experiment and they proved that genetic material is DNA। Genetic material is DNA। इनके इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। इट इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। दिस इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। व्हाट्स द मीन ऑफ ट्रांसडक्शन? इफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ट्रांसफरिंग या sending its genetic material to another living organism, then we say that is the transduction process। So Hershey and Chase proved in 1952, they proved that genetic material is DNA। They performed an experiment and according to the experiment, that experiment is known as transduction experiment, or that is also known as bacteriophage experiment। Why this is called bacteriophage experiment? हर्शे और चेज ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक बैक्टीरियोफाज लिया। Bacteriophage, they used bacteriophage for their experiment। What the mean of bacteriophage? Bacteriophage word से आप क्या समझते हो? These are those virus, bacteriophage are those virus which infect bacteria, and this is known as bacteriophage। The virus which infect bacterial cell, that is known as bacteriophage। तो हमारे हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था
that was given in 1952, and that they proved that genetic material is DNA. This method or this experiment is known as transduction experiment, and you can say this is the bacteriophage experiment. This was unmistakable experiment, and finally they proved that DNA genetic material है. उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया. बैक्टीरियोफाज उन्होंने कौन सा लिया? They took bacteriophage T2 for their experiment, and they took the cell E. coli और उन्होंने E. coli को T2 बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट करवाया, एंड T2 बैक्टीरियोफाज ने अपना कौन सा पार्ट, इधर डीएनए और प्रोटीन, कौन सा पार्ट उन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज ने E. coli में ट्रांसफर किया, ये उन्होंने प्रूव किया. You know E. coli is a commensal bacteria which is present inside the human body, and T2 bacteriophage, it is a type of bacteriophage which having the both structure in their, both part in its structure. DNA as the genetic material, DNA is the genetic material, and second is it having protein coat which is present outside of the DNA, and that protein coat it is known as capsid. So T2 जो बैक्टीरियोफाज था वो दोनों चीज़ों से, दोनों पार्ट्स से मिलकर बना हुआ था, डीएनए से भी और हमारे प्रोटीन से भी. और जो हमारी कंफ्यूजन थी कि जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या प्रोटीन है, सो बोथ द मीडियम was found in T2, and that's why Hershey and Chase ने इसको चूज किया, because it was the suitable for their experiment. Hershey and Chase labeled two, Hershey and Chase prepared two type of colonies of E. coli. One colony was labeled with sulfur and second colony was labeled with phosphorus. ये उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया. सल्फर, radioactive sulfur. They used radioactive sulfur and radioactive phosphorus. You know why they used sulfur? क्योंकि sulfur है that radioactive sulfur which was used by Hershey and Chase, that incorporated with the amino acid which were present in T2 bacteriophage, and that amino acid was cysteine and methionine. This is the this was the structure of T2 phase. Here is the genetic material, this is the DNA, and this is the protein card. हमारे हर्शे ने और चेज ने दो टाइप के रेडियो एक्टिव्स अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए. पहला रेडियो एक्टिव सल्फर एंड सेकंड वाज रेडियो एक्टिव फास्फोरस. You know why radioactive sulfur? Because radioactive sulfur is the part is sulfur, radioactive sulfur that incorporated into cysteine and methionine. और cysteine और methionine दोनों ही क्या है? अमीनो एसिड. एंड अमीनो एसिड किसके पार्ट हैं? अमीनो एसिड आर द मोनोमर्स ऑफ द प्रोटीन. तो हो गया ना भाई, प्रोटीन का पार्ट हो जाएगा हमारा सल्फर. एंड फॉस्फोरस, यू नो वेरी वेल दैट फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द structure of DNA. This phosphorus
this phosphate group is present towards the 5 prime of carbon, it having DNA having, as you know, DNA having 2 chain, so that we discussed in previous topics. Now you just hear जो हमारा phosphorus है that incorporated into DNA, और जो हमारा radioactive sulfur है that incorporated into methionine and cysteine, and both methionine and cysteine is a part of protein. So here in that experiment, the Hershey and Chase completed their experiment into 3 stages. First stage was infection. First stage, 3 stages of their experiment. First step was infection. Second step was blending, and third was centrifugation. They complete their experiment in these 3 steps: infection, blending, and third was centrifugation. Let's we draw the diagram about this experiment. Now we discuss with this diagram. This experiment is also known as blender experiment. Blender experiment, transduction experiment, and this is also known as bacteriophage experiment, because in this experiment bacteriophage used. This bacteriophage is, as I told you, that Hershey and Chase used sulfur radioactive and second was phosphorus radioactive. तो उन्होंने जब सल्फर रेडियोएक्टिव को यूज करके जो एक्सपेरिमेंट किया, सल्फर रेडियोएक्टिव से बैक्टीरियोफाज को जब तैयार किया, तो sulfur radioactive sulfur incorporated with the protein code, because protein, it's having amino acid and sulfur is a component of cysteine and methionine. So this is a protein code. It's a first step that is about infection. The bacteriophage start to infect the cell, bacterial cell, and they come in contact with the bacterial cell and start to stain its genetic material inside the cell. Second is blending. They stain the genetic material inside the cell, that is E. coli, and they left out and they cross or they cut the connection. They cut the connection between viruses and bacterial cell. Third step is about centrifugation. This is the centrifugation. Centrifugation is a third step. In third step, Hershey and Chase reported that there is no presence of sulfur. अगर यहाँ पे प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो प्रोटीन हमारे बैक्टीरियोफाज से नेक्स्ट सेल तक ट्रांसफर हो जाता, बट हमारे हर्शे ने और चेज ने यहाँ कोई भी सल्फर का पार्ट ऑब्जर्व नहीं किया, कोई भी रेडियो एक्टिव सल्फर यूज नहीं ऑब्जर्व नहीं किया। ऑब्जर्व उन्होंने कहाँ किया? उन्होंने सेल से बाहर जो हमारे सुपर नेटेंट थे उन पे उन्होंने सल्फर रेडियो एक्टिव सल्फर ऑब्जर्व की। तो इससे ये तो क्लियर हो गया था कि हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन नहीं है, क्योंकि अगर प्रोटीन होते तो प्रोटीन यहाँ पे सल्फर यहाँ इनसाइड द ई कोलाई सेल मिलते, जबकि ई कोलाई के अंदर हमारे सल्फर के पार्ट्स नहीं मिले। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। सेकंड, फिर उन्होंने फास्फोरस को लेके अपना एक्सपेरिमेंट आगे प्रोसीड किया। सेम स्टेप, infection, blending, and third is centrifugation. Bacteriophage, this
In the previous step of the previously they used sulfur as the part of protein and radioactive sulfur they used. In second step और second जो step थी main step experiment की, they used radioactive phosphorus. Phosphorus why? Because phosphorus is a part of DNA. Same steps, infection, उन्होंने infection करवाया, infection से bacteriophage come in contact with the E. coli and try to send its genetic material to the E. coli. And second is blending, they cut the connection between E. coli and the viruses and send its genetic material with the blending, with the help of blending into the E. coli. Third is same centrifugation process. Centrifugation process में जब हमारे हर्शे और चेस ने observe किया, then what they found? They found that phosphorus is not present here. Phosphorus is present inside the cell, inside E. coli cell. So उन्होंने क्या इसका conclusion finally what the conclusion they found? उन्होंने ये पाया कि हमारा जो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ उनको लगा कि हमारा जो सल्फ़र है अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो यहाँ सल्फ़र एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफ़र हो जाता, बट ऐसा नहीं हुआ. तो यहाँ पे फिर जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हुआ उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कहाँ मिला? उनको रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस सेल के अंदर मिला. इट मीन्स हमारा जेनेटिक मटेरियल है दैट इज अ डीएनए. सो स्टूडेंट्स हमारा ये यहीं पे ख़त्म होता है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड सो यू कैन गो इन कमेंट बॉक्स एंड राइट योर कमेंट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.